2025 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी कंप्रीहेंशन है, चलिए देखते हैं। पैसेज हमारा है कि हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, cost falls rapidly because of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, which became about 90% cheaper during the 2010, repeatedly beating forecasts. Moving yearly and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefit of path-dependent green investment without much disruption. A late, more chaotic transition is costlier. So, which one of the following statement best reflects the central idea of the passage? पैसेज हमने पढ़ा। अब 4 ऑप्शन की ओर देखते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ फर्स्ट। सेकंड, modern technological progress is intensely linked to path dependent innovation. Third, countries with large economies are in a better position to adopt green technology. Fourth, timing plays a crucial role in the case of green technology development. तो करेक्ट हमारा होगा टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड करते हैं सेंट्रल एरिया ग्रीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से रिलेटेड है। तो पैसेज डिस्कस करता है डेवलपमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, हाईलाइट कर रहा है सेवरल की फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट एंड डेवलपमेंट को। एम्फसाइज कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीप लर्निंग कर्व वेयर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लीड्स टू रैपिड कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग. The passage also introduces the idea that the green innovation is path dependent, meaning past investment influence future ones. तो क्रूशियल कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो ड्रॉन बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेस टू ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन एनर्जी. द पैसेज हियर स्टेट्स दैट मूविंग ईयरली and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefit of path-dependent green investment without much disruption. तो a late more chaotic transition जो है वो costlier होता है. This directly compare underscores the significance of timing and pace of adopting green technology. So analyze करना है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अगर एनालाइज किए तो the passage mentions economies of scale is one reason cost falls. Costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. While important, the passage presents it as one factor among other. Learning by doing path dependence timing. That is contributes to cost reduction and smooth transition. It does not state that economies of scale alone are essential or the central idea of the entire passage. We discuss the transition process more broadly. ऑप्शन 2 की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन. तो दिस पैसेज जो है स्पेसिफाई करता है कि फर्म्स ग्रीन इनोवेशन जो है पाथ डिपेंडेंट. इट डज नॉट जनरलाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. द फोकस इज नैरोली ऑन ग्रीन इनोवेशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन जो डिस्कस किया गया है. Therefore, this statement is too broad and not the central idea of this specific passage. So, ऑप्शन थर्ड की ओर चलते हैं. तो countries with large economies are in better position to adopt green technology. The passage mentions economies of scale, which might implicitly benefit large economies, but it never explicitly states that countries with large economies are better positioned. तो डिस्कशन है यहाँ about how cost falls as more is produced and how the timing of transition affect cost and disruption applicable to economies in general regardless of their size. So option 4 यहाँ है कि timing plays a crucial role in the case of green technology development. So this statement directly aligns with the passage 4 message. The passage here explicitly contrasts the outcome of moving early and gradually versus a late, more chaotic transition, highlighting the benefit, less disruptive reaping benefit of the former and higher cost of the latter. This comparison clearly indicates that the timing of the transition to green technology is presented as a crucial. Conclusion की बात करें तो identifying the central idea. So based on the analysis, the passage heavily emphasized the difference in outcome based on whether the transition to green technology happens yearly and gradually or late and chaotically. The benefit of the learning curve and path dependence are best captured when an economy has time to adjust, which is facilitated by an early start. The core argument revolves around the importance of timing for a successful and less costly transition. तो रिवीजन
की बात करें कि कॉन्सेप्ट इन दिस पैसेज, तो फर्स्ट है स्टीप लर्निंग कर्व। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि कॉस्ट फॉल रैपिडली एज मोर इन प्रोड्यूस्ड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो वन फैक्टर causing कॉस्ट टू फॉल विथ इंक्रीज प्रोडक्शन। थर्ड की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, अनदर फैक्टर causing cost to fall with increased production। तो here relevance to central idea about हम अगर देखें तो मैकेनिज्म है ये, एक्सप्लेन जो करता है कॉस्ट रिडक्शन एंड बेनिफिट ऑफ अर्ली अडॉप्शन। नेक्स्ट जो देखें पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इनोवेशन, तो व्हाट अ फर्म डज नाउ इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज लेटर। Support the idea the early investment creates a future benefits. Timing early versus late. Early gradual transition is less disruptive and costly than a late chaotic one. The central point of the contrast main argument about successful transition. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर बात करें तो ग्रीन ट्रांजिशन एंड पॉलिसी से रिलेटेड ये पैसेज हाईलाइट कर रहा है द ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन एनर्जी इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट्स आल्सो अबाउट द प्रोसेस ऑफ adoption and integration into the economy. Policy decisions regarding the timing and pace of this transition are critical. An early, well-managed transition can leverage the learning curve and path dependence to reduce costs and disruption over time. Conversely, a delaying the transition might lead to a need for rapid force change later, potentially at a higher economic and social cost. The example of solar energy price collapse illustrates how quickly cost can drop, reinforcing the advantage gained by economy that invested earlier. तो हमने यहाँ देखा क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज नंबर 2 सी सेट टू यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।